जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, टीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलते आज आम स्टार्ट करवा हाईकोर्ट एएसओ लास्ट 6 मंथ रो करंट अफेयर स्टार्ट करवा। आमे कौन करवा मंथ वाइज कौन करवा गोटे गोटे वीडियो करवा, माने प्रथमे मार्च रो करवा, देन तापर फेब्रुआरी, देन जनवरी, एमती बैक बैक जीवा। ठीक अछि, मंथ गुडा बैक बैक करी जीवा, माने एबे रिसेंट मंथ रो नै कि प्रीवियस मंथ गुडा को आमे गोटे गोटे करी आमे करंट अफेयर देखिबा। तो चलते आम प्रथम देखा मार्च मासर करंट अफेयर देखा। मार्च मास 2025 माने लास्ट 6 मंथ रो मार्च नहीं कि यार बैक जीवा 6 मंथ जाए जी करंट अफेयर अच्छे देखा। आपण मैंने जानते आमर हाईकोर्ट एएसओ रो एग्जाम डेट अनाउंस हो जाइए। एग्जाम डेट केबे 4 तारीख मे मास 2025। हाँ कि नहीं, संडे दिन कौन होची ना एग्जाम होची हमरो एएसओ हाईकोर्ट रो। एएसओ हाईकोर्ट पे प्रीलिम एग्जाम रे कोन आसी करंट अफेयर आसी कि नहीं, तो सेति पे कोन हे जिवो लास्ट 6 मंथ रो करंट अफेयर एएसओ हाईकोर्ट पे इंपोर्टेंट हे जिवो। तो चलंत हमें स्टार्ट करिवा। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन कोन दैछि देखंतु, व्हाट इज द चैरिटेबल एक्ट परफॉर्म्ड बिफोर द ईद उल फितर प्रेयर aimed at supporting the less fortunate? कौन सालात अल ईद और जागत अल फितर और स्वयं और हज। तो देखियो यार आंसर कौन हो जागत अल फितर हम। तो देखो यार एक्सप्लेनेशन मध्य देइछि, हमें एक्सप्लेनेशन मध्य देखिबा। आंसर देइछि कौन बी। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ब्रह्म? यार मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला? ए मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया इन मार्च 2025 मार्च रे भारत द्वारा गोटे मिशन लॉन्च कराइतला, ना होचे ऑपरेशन ब्रह्म। तो यार मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला? तो देखियो यार आंसर कौन हे जिवो ऑब्जेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज टू डिलीवर रिलीफ एड टू म्यांमार। मन रखिबे म्यांमार आफ्टर एन अर्थक्वेक। मन रखिबे एग्जाम रे एमती मध्ये पचारि परिबो रिसेंटली केउ देश रे अर्थक्वेक हेतिला, तो म्यांमार मन रखिबे। ठीक अछि, ए म्यांमार को साहाय्य करिया पे कोन करथिला हम भारत सरकार गोटे ऑपरेशन लॉन्च करथिले। से ऑपरेशन ना होचे ऑपरेशन ब्रह्म। देन देखिबा, व्हिच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज INICHOS माने इनकोएस 2025 और 25। तो देखिबा केउ कंट्री होस्ट करछि, देखिबा फ्रांस, ग्रीस, इटली ना जर्मनी। तो देखिबा यार आंसर कौन हो ग्रीस हो। तो देखिबा इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज व्हिच बिगिन टुडे, दैट मींस मार्च 31 2025 केउठारे ना आंध्राविडा एयरफोर्स इन ग्रीस। ग्रीस टारे होउछ, माने ग्रीस देश कोन करछा को होस्ट करूची हो। ठीक अछि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द विक्रम संवत एरा बिगन इन व्हिच ईयर बीसी? आपण मन जानिथिबे कैलेंडर गुडा मध्ये अछि, डिफरेंट डिफरेंट कैलेंडर अछि। ता अनुसार विक्रम एरा मध्ये स्टार्ट हेछि, माने विक्रम संवत युग स्टार्ट हेछि केबठु ना 78 बीसी, 57 बीसी, 320 बीसी ना 500 बीसी। तो देखिबा तो यार आंसर कोन हबो 57 बीसी हे जिवो। ठीक अछि, विक्रम संवत वन ऑफ द ट्रेडिशनल हिंदू लूनार कैलेंडर marks the beginning of the Hindu New Year in 2025. The Vikram Samvat New Year celebrated on March 30, ushering in the 2082. Elon Musk sold the social media site X, formerly Twitter, to which company in March 2025? आपण जानिथिबे ट्विटर थिला, जाकी प्रथमे ना थिला कोन ट्विटर थिला। ट्विटर थिला बेले कोन हेतिला, ए ट्विटर को के किनिथिले? एलन मस्क किनिथिले कि नहीं? एलन मस्क ताकू किनिथिले। किनला पर एलन मस्क कोन करथिले, यार नाम परिवर्तन करी एक्स देथिले, जो ट्विटर रो अन्य नाम देथिले एक्स। तो वर्तमान ए एक्स को पुनर्बार कोन करचंदी एलन मस्क आ गोटे कंपनी को से कोन करचंदी बिक्री कर दैचंदी। देखिबा से कंपनी रो नाम कोन? तो कंपनी रो नाम होच कोन XAI. Elon Musk sold the social media site X, that is
पूर्व कौन जना जाउथला ना ट्विटर टू हिज एआई कंपनी तांकर ही गोटे एआई कंपनी अछि XAI in a 33 billion deal on 28 March 2025. Who won India's first gold medal in the women's 62 kg category at the Asian Wrestling Championship 2025? Who wants माने किए जीतिले गोल्ड मेडल वुमेन्स 62 कैटेगरी एग्जाम रे एमती मध्ये पचारे केउ कैटेगरी मध्ये जीतिले पचारे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप रे जो देखिबा अंतिम पंगल और मनीषा बनवाला ओके जे किम और मेंग हैज हेसिस तो देखिबा तो यार आंसर कोन हेजिबो ऑप्शन बी मनीष बनवाला ऑन द गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 defeating Korea's ओके जी किम 8 को 7 पॉइंट रे इन वुमेन 62 kg कैटेगरी जेतिकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची सब आमे डिस्कस करचुंदी मार्च मासरो मार्च 2025 रो जेतिकी हमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बा इंपोर्टेंट करंट अफेयर होची आमे डिस्कस करचुंदी तापर आमे मार्च पर फेब्रुआरी करिबा व्हिच स्टेट्स Which state topped the medal tally at the Khelo India Para Games 2025? मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जीवो Which state topped the medal tally? medal tally रे खेलो इंडिया पारा गेम्स हेतिला तो सेथरे किए टॉप करछि तो देखियो यार आंसर कोन हेजो हरियाणा हेजो यार आंसर हरियाणा कोन करछि देखंतु द खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025 concluded on March 28 at JLN Stadium न्यू दिल्ली रे एटा कंक्लूड हेतिला हरियाणा लीड द मेडल टाली विथ 38 गोल्ड मेडल एग्जाम रे मध्ये पचारिबो कि केतोटी गोल्ड मेडल सहित हरियाणा टाली रे माने एक नंबर अछि तो देखिबो 38 गोल्ड मेडल रे तापर कि आसीबो हरियाणा आसीबो हरियाणा पर कि आसीबो तमिलनाडु आसीबो तमिलनाडु केतोटी गोल्ड ना 28 टी गोल्ड हरियाणा केतोटी ना 38 गोल्ड देन नेक्स्ट आसीबो यूपी रे आसीबो 23 टी गोल्ड ठीक अछि मन रखिबे गोल्ड गुडा पचरंती केउ स्टेट रो केतटी माने गोल्ड नै चंदी खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025 व्हाट इज द न्यू रेट्स डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ इफेक्टिव फ्रॉम द जनवरी 1 2025 रो कोन हबो न्यू रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस हेची तो देखिबा केते परसेंटेज 57 53% 54% 55 और 56 तो देखिबा तो यार आंसर कोन हे जीवो 55%. Union Cabinet on March 28, 2025 approved 2% increase in the DNS allowance DA for central government employees and DNS relief DR that is for pensioners and effective from January 1, 2025 raising it from 33% to 53% to 55% बेसिक पे और पेंशन पेंशनर्स मानन को कोन कराई छि 2% इंक्रीज करी कि केते करा गला 53 रो 55 करा जाई छि ठीक अछि Indian Space Resource Organization that is ISRO completed the rolling experiment in March 2025 this is part of which mission ए पार्टा केउ मिशन रो नाम चंद्रयान 4 ना गगनयान ना स्पेस ना स्पाडेक्स ना मंगलयान 2 तो देखिबा तो यार आंसर कोन हे जिवो स्पाडेक्स हे जिवो ठीक अछि स्पाडेक्स हे जिवो यार आंसर तो स्पाडेक्स कोन देखंतु ऑन मार्च 27 2025 द इंडियन स्पेस रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन completed the rolling experiment this was part of the space docking experiment that is mission एग्जाम रे पचरि पारे स्पाडेक्स रो फुल फॉर्म भी पचरि पारे ठीक अछि तो कोन हेजबो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को हमें स्पाडेक्स मध्ये कहबा व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस in March 2025 in the high altitude
टेरेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो देखिबा कौन से नाम कौन देछि ए जो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज रो नामडा कौन प्रचंड प्रहार विजय शक्ति पूर्वी प्रहार ना अग्नियोद्ध। तो देखिबा यार आंसर कौन हबो प्रचंड प्रहार हे जिवो यार आंसर। यार एक्सप्लेनेशन मध्ये हम देखिबा तो देखंतु प्रचंड प्रहार ले यार आंसर। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड ए ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कॉल्ड कौन प्रचंड प्रहार केउठारे इन द हाई अल्टीट्यूड टेरेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश रे the army air force and navy collaborated to set their coordinated operational capabilities. Next question हम देखिबा which companies signed contracts with the Ministry of Defense for the procurement of NAG missile system, that is NAMIS tracked version and light vehicle। क्यों कंपनी सहित से साइन करछि तो देखिबा तो ये आंसर कोन हो देखंतु ऑप्शन बी दैट इज ऑप्शन बी आर्मोर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड फोर्स मोटर्स एलटीडी and Mahindra Ltd। On March 2025, the Ministry of Defense signed contracts with Armed Vehicle Nigam Limited, Forces Motors Ltd, Mahindra Ltd to produce the NAG missile system tracked version, that is 5,000 light vehicles for armed forces totaling 2,500 crore। What is the purpose of Thakkar taxi service? Thakkar taxi service रो माने मेन उद्देश्य बा पर्पज कोन to provide free rides to passengers, to create a cooperative based taxi service, to promote private ride hailing companies, to increase government control over transportation। तो देखिबा तो यार आंसर कोन हे जिवो to create a cooperative based taxi service, that is option B हे जिवो यार आंसर। कौन देखंतु India government set to introduce a new cooperative based taxi service called Sahakar Taxi। This initiative, announced by Union Home Minister Amit Shah in Parliament on 27th March 2025, aims to provide an alternative to private ride hailing platforms like Ola and Uber। ये अनाउंस करथिले ना अमित शाह अनाउंस करथिले। Indian origin scientist Jay Bhattacharya has been appointed as director of which institute in USA? Institution क्यों institution रे से आज डायरेक्टर हिसाब रे अपॉइंट करचंदी इंडियन ओरिजिन जय भट्टाचार्य TDC ना NIS WHO ना FDA। तो देखिबा तो ये आंसर कोन हम देखंतु ऑप्शन दैट इज बी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रे जय भट्टाचार्य को कौन कराई आज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हिसाब से अपॉइंट करा जायछि। का द्वारा नॉमिनेट कराई नॉमिनेटेड बाय द डोनाल्ड ट्रम्प। ही वाज कन्फर्ड ऑन मार्च 25 2025 एंड तांकर वोटिंग रे से 53 वोटिंग रे से जीति संदी। Which team become the world champion at 2025 सेपाक takraw world cup? सेपाक takraw वर्ल्ड कप रे केउ देश बा केउ टीम जीतिछि देखिबा केउ देश रे टीम जापान मालयेशिया साउथ अफ्रीका ना इंडिया। तो देखिबा तो यार आंसर हे जिवो इंडिया हे जिवो यार आंसर। who is leading the Argentina national football team on their visit to India in October 2025? Who leading Argentina national football team on visit माने इंडिया को जो अक्टोबर आसीबो के लीड करचंदी ना पाउलो डिबाला लियोनेल मेसी और एंजेल डी मारिया और लाउतारो मार्टिनेज। तो देखिबा तो आंसर कोन हे जिवो लियोनेल मेसी एंड को लीड करचो।
What is the full form of VLSRSAM successfully tested DRDO in 2025? तो देखिबा तो यार फुल फॉर्म कोन हे जिवो देखंतु यार फुल फॉर्म हे जिवो ऑप्शन बी दैट इज vertically launched short range surface to air missile. Rajiv Gauba has recently appointed as Union Home Secretary, full-time member of Niti Aayog, Cabinet Secretary or Secretary in the Ministry of Urban Development. तो देखिबा तो ये आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन बी दैट इज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग हिसाब रे कोन राजीव गौबा को अपॉइंट करा जाई छी. What is the significance of India's first indigenous MRI machine set to installed at AIMS Delhi by October 2024-25 for the clinical trial? So यारो significance कोन it reduce independence on imported medical equipment. What is the main aim of the disaster management bill amendment bill 2024? जो हमरो असले amendment bill कहारो ना disaster management रो amendment bill यारो main उद्देश्य कोन to reduce taxes, to strengthen the NDMA and SDMA, to create new political constituencies or to increase foreign investments. तो देखिबा तो ये आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन बी दैट इज to strengthen the NDMA and SDMA. How much will customers be charged for a financial transaction beyond the free limit from May 1 by that is 19? Financial transaction beyond the free limit will now RS 19 rupees transaction up from 17 rupees, that is from May 1 2025. What is percentage of India's workforce was covered by social security in 2024 according to the ILO report? तो देखिबा केते परसेंटेज होची 24.4% और 48.8% और 40.3% और 50%. तो देखिबा यार आंसर कोन है ऑप्शन बी दैट इज 48.8%. What is the original name of the Assam Rifles when it was first raised in 1835? 1835 रे जतले फर्स्ट रेज कराइतला ए आसाम राइफल रो नाम कोन थिला कोन चाचार लेवी. ठीक अछि मन रखिबे. When is the tuberculosis day, World Tuberculosis Day observed every year? तो देखियो यार आंसर कोन हबो 22 मार्च, 13 जनवरी, 24 मार्च और 21 फरवरी. तो देखियो यार आंसर कोन हबो ना वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे observed on 24 March. Why did Justice Yashwant Verma come under controversy in March 2025? Corruption allegations, discovery of cash at his residence, or misuse of judicial power, conflict with senior judges. तो देखिबा discovery of cash at his residence is वो यार आंसर. तो देखंतु discovery of cash is residence. Justice Verma is currently under scrutiny following the allegations of large stacks of cash being discovered at his Delhi residence after fire broke out on March 14, 2025. Who has been appointed as new Finance Secretary of India on March 24, 2025? ये ना अजय सेठ हेचंदी कोन ना न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रो हेचंदी. What is the revised monthly salary of Lok Sabha and Rajya Sabha members effective from April 1, 2023? तो देखिबा 1 लाख, 1.24 लाख और 1.5 लाख और 1.75 लाख. तो देखिबा तो यार सैलरी कोन जो रिवाइज सैलरी जो 1.24 लाख
मन रखिबे who has been selected as the ज्ञानपीठ अवार्ड इन मार्च 2025 तो देखिए यार आंसर कौन हम गुलजर और विनोद कुमार शुक्ला और जावेद अख्तर और रोस्किन बॉन्ड तो देखिबा तो यार आंसर कौन है विनोद कुमार शुक्ला है यार आंसर ऑप्शन बी दैट इज विनोद कुमार शुक्ला आंसर है renowned Hindi poet and writer Vinod Kumar Shukla has been honored with the prestigious Jnanapith Award on 22 March 2025. When is World Water Day annually observed? Water Day World observed आमे केबे ऑब्जर्व करछंती 20 मार्च ना 21 ना 22 ना 23 मार्च तो देखिबा तो यार आंसर कोन है जिवो 22 मार्च रे आमे कोन करछंती वर्ल्ड वाटर डे सब आमे ऑब्जर्व करछंती ठीक अछि वर्ल्ड वाटर डे when is शहीद दिवस is observed in India to honor भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु ए तीन जन कोन हेतले अमर हेतले सेहि दिन भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु एमन को कोन कराइतला ना फांसी दिया जाइतला ब्रिटिश मानक तरफरु माने सेदिन कोन हेतले एई तीन जन फ्रीडम फाइटर कोन शहीद हेतिले तांकर एई दिवस को आमे कोन केउ दिवस रो ऑब्जर्व करचुंदी शहीद दिवस रो आमे ऑब्जर्व करचुंदी एई शहीद दिवस केबे हेतिला मार्च 23 तारिख रे एई शहीद दिवस ऑब्जर्व करचुंदी 23rd March every year in India to pay tribute to brave freedom fighters Bhagat Singh, Sukhdev, Thapar and Shivaraman Rajguru. Which teams did India defeat in men's and women's Kabaddi World Cup 2025 finals? तो देखिबा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और ईरान तो यार आंसर कोन है जिवो इंग्लैंड है जिवो यार आंसर ऑप्शन बी दैट इज इंग्लैंड Which country become the first non-host nation to qualify for the 2026 FIFA World Cup 2026 रे जो FIFA World Cup हेबा को जाउची तो सेथिरे केउ नॉन होस्ट नेशन क्वालिफाई करची साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया जापान और ईरान तो देखियो यार आंसर कोन हबो जापान है जिवो यार आंसर मन रखिबे जापान When is International Day of Forest observed every year? मार्च 21 तारिख रे आमे कोन करछंती ना इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आमे ऑब्जर्व करछंती Who was elected as the president of International Olympic that is IOC from Zimbabwe in March माने इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी रो प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे रो के इलेक्ट हेचंती उसेन बोल्ट और क्रिस्टी कवेंट्री माइकल फिलिप्स और साइमन ब्लेज यार आंसर कोन है जिवो ना क्रिस्टी कवेंट्री है जिवो यार आंसर Which city has India proposed to host the 2030 Commonwealth Games माने इंडिया रे केउ सिटी 2023 रे हेबा जाउतबा कॉमनवेल्थ को होस्ट करिवो मुंबई अहमदाबाद न्यू दिल्ली और कोलकाता तो देखिबा आंसर कोन हेजिवो अहमदाबाद हेजिवो यार आंसर Which major rule change has been introduced in IPL 2025 regarding ball signing? तो देखिबा only synthetic balls will be used or bowlers can sign the ball using saliva or bowlers can't sign the ball at all or only spinners are allowed to sign the ball. तो देखिबा तो ये आंसर कोन है जिवो bowlers can sign the ball using saliva ठीक अछि इंडियन
Premier League 2025 saliva ban lifted bowlers can now sign the ball using saliva ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସାଲିଭା ଲଗେଇ କଣ କରୁଥିଲେ ବା ଛେପ ଲଗେଇ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଲ को ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ଏବେ এই ବର୍ଷ ଲିଫ୍ଟ ହେଇ ଯାଇଛି ବା ବ୍ୟାନ୍ ଉଠି ଯାଇଛି नेक्स्ट हम देखिबा which for sacred shrines make up the चार धाम यात्रा माने कागु बुझा जाउची तो हमें देखिबा गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ एंड बद्रीनाथ ए चारटी को हमें कोन कहबा ना चार धाम यात्रा बोले हमें कहबा where is ISTF सेपाक ताकरा 2025 World Cup held in March 2025 मुंबई पटना दिल्ली चेन्नई तो देखिबा यार आंसर कोन हे जिवो पटना हे जिवो यार आंसर नेक्स्ट देखिबा which ancient religion is associated with the celebration of Navroz तो हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जोरास्ट्रियनिज्म और जैनिज्म तो देखिबा यार आंसर है जो ऑप्शन सी दैट इज जोरास्ट्रियनिज्म है जो यार आंसर व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड स्पैरो डे केबे ऑब्जर्व करा जाए मार्च 20 अप्रैल 22 मई 5 जून 8 तो देखिबा यार आंसर है जो मार्च 20 है जो यार आंसर ठीक अछि The 23rd edition of Naval Exercise Borun was conducted in March 2025 between which country? India and France मध्य conduct कराई मन रखिए ऑप्शन बी दैट इज इंडिया एंड फ्रांस Who is Bill Gates who visited India and met Prime Minister Modi in March 2025? A renowned scientist, co-founder of Microsoft and philanthropist, a famous author and AI researcher माने बिल गेट्स किए एठारे पचर जाइछि तो बिल गेट्स किए एठारे co-founder of Microsoft and a philanthropist where will the new brownfield ammonia urea complex fertilizer plant be established as per government approval in March 2025 तो देखिबा यार आंसर है जो नामरूप असम How long was the extended mission of NASA astronauts Sunita Williams and Buzz Wilmore in space? केते दिन रहिथिले 8 दिन 286 दिन 1 year ना 365 days तो एडा आंसर कोन हिजबो 286 days रहिथिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिजबो एग्जाम रे आसीबार संभावना बहुत अछि Which spacecraft was used for the astronauts' return journey to Earth? क्यों spacecraft को यूज करा जाइछि ना बोइंग स्टारलाइनर स्पेस शटल और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन और सोयूज कैप्सूल तो देखिबा यार आंसर कोन हिजबो स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यूज करा जाइछि What was the primary purpose of the phone call between Trump and Putin on March 18, 2025? Primary purpose कौन थिला? To discuss economic sanctions or to convince Moscow to agree to a 30-day ceasefire in Ukraine, to negotiate trade agreements, to plan a diplomatic summit in Russia. तो देखिबा तो यार आंसर कौन हिजबो ना ऑप्शन बी दैट इज to convince Moscow to agree 30-day ceasefire in Ukraine. How will the Election Commission proceed with linking EPIC with Aadhaar based on the personal preferences of the Chief Commissioners or as per provisions of Article 326 Representations of the People Act 1950 and relevant Supreme Court judges based on the majority vote of Election Commission members without any legal or constitutional basis. तो यार आंसर कौन है जीवो ऑप्शन बी है जीवो यार आंसर
According to the Article 326 of the Indian Constitution, who has right to vote? Who has the right to vote? କାହାର ନା right to vote ଅଛି ନା citizen ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ right to vote ଅଛି ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟ ଦେବାର କେତେ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ କରୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 326 What is the name of the new boxing body recognized by IOC for LA 2028 तो मन रखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग कोई गोटे नुआ बॉक्सिंग बॉडी ऑर्गेनाइज को रिकॉग्नाइज करा जायछि what was the what was one of the key topics discussed during Luxon's meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi space exploration free trade agreements negotiations environmental conservation sports partnership देखिबा तो यार आंसर है जो कोन दैट इज बी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएशंस करा जायछि who is US director of national intelligence who visited India in March 2025 US director of national intelligence NI जे कि इंडिया को विजिट करचंती तुलसी गाबार्ड एंटोनी ब्लिंकेन और लियर्ड ऑस्टिन कमला हैरिस यार आंसर कोन हेजिवो तुलसी गाबार्ड हेजिवो यार आंसर Which prestigious award did RBI win in 2025 from Central Banking London तो देखिए यार आंसर कौन है ऑप्शन बी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड Who was the chief guest at Raisana Dialogue 2025 में के चीफ गेस्ट थिले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिडा तो देखिबा यार आंसर कोन हेजबो सी दैट इज न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन हेजबो यार आंसर वेयर वाज द क्रायोजेनिक इंजन हॉट टेस्ट फॉर LBM3 M6 conducted by ISRO तो देखिबा तो यार आंसर कोन हेजबो दैट इज ऑप्शन सी ISRO propulsion complex तमिलनाडु who was the captain of Mumbai Indians during their second Women's Premier League title victory in March 2025 Harmanpreet Kaur thile yaro captain which country is hosting Kabaddi World Cup 2025 ना इंग्लैंड आपको कौन करिवो कबड्डी वर्ल्ड कप को होस्टिंग करिवो What is the date of World Consumer Rights Day? World Consumer Rights Day रो डेट केते ना मार्च 15 हिजो World Consumer Rights Day. Which mission was launched in March 2025 to bring back standard astronomers Sunita Williams and Buzz Wilmore जे कि 286 दिन से माने कोन करथिले ना स्पेस रे रहिथिले तो यांको पई बैक पई कोन करथिला स्क्रू 10 को यूज करा जायतिला होली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ कार विक्ट्री पई हमें होली ऑब्जर्व करछंती विंटर ओवर समर एविल ओवर गुड गुड ओवर एविल डार्कनेस ओवर लाइट तो देखिबा गुड ओवर एविल दैट इज ऑप्शन सी इज वो यारो राइट आंसर व्हाट डज स्पाडेक्स स्टैंड फॉर Space Development Experiment, Space Docking Experiment, Satellite Docking Exploration, Space Dynamic तो देखिबा तो यार आंसर कोन हे जिवो ना Space Docking Experiment that is option B हे जिवो यार आंसर Who become the chief executive of the India's Banks Association IBA रो न्यू एग्जीक्यूटिव किए हेले नुआ चीफ एग्जीक्यूटिव किए हेले
सुनील मेहता, अतुल कुमार गोयल, राजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य। तो यार आंसर कौन है? अतुल कुमार गोयल है यार आंसर। According to QS World University Rankings by subject 2025, how many Indian universities are among the world top 50? World top 50 रे केतोटी सिटी अछि यूनिवर्सिटी अछि देखिबा तो 9टी। Which Indian institution secured the highest rank in QS subject rankings 2025? IIT Bombay, IIT Delhi, Indian School Mines Dhanbad, or IM Ahmedabad? Option C, that is ISM, Indian School Mines Dhanbad. Which two IITs ranked top 50 for engineering and technology? IIT Madras, IIT Delhi, IIT Kharagpur, IIT Roorkee, IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Kanpur, and IIT Guwahati. तो देखिए कौन है ऑप्शन सी, दैट इज IIT दिल्ली एंड IIT Bombay. Which Indian institutions ranked in top 50 for business and management studies? देखिबा तो यार आंसर कौन है देखो IIM Ahmedabad and IIM Bengaluru है यार आंसर. Which test from the light combat aircraft LCA AFMK1 prototype was successfully conducted in March 2025? BrahMos missile test, Astra Bibiram test, Prithvi 2 missile test, Nirbhaya cruise missile test. The Astra Bibiram test is your answer. Who hijacked the passenger train in Balochistan in March? बालोचिस्तान रे कौन होता ना गोटे हाइजैक होता कि ट्रेन हाइजैक किए करते ना बालोच लिबरेशन आर्मी को कौन करते हाइजैक करते. Who became the first Indian to receive the Mauritius highest civilian award, the Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean? यार आंसर है नरेंद्र मोदी है यार आंसर. Which company satellite based internet service is Reliance Jio bringing to India? OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper, or Google Loan? तो देखिबा Starlink है यार आंसर. Who is the founder of SpaceX? The company behind the Starlink. SpaceX रो founder किए ना एलन मस्क होचंदे SpaceX रो founder. According to the India Web3 Land Space Report 2025 March, how many Indian developers joined GitHub in 2024? 4.7 billion. Where is the World Para Athletic Grand Prix 2025 being held? That is New Delhi, India. Madhav National Park, which was declared a tiger reserve in March 2025, is located in which district of MP? मन रखिए आपको गोटे कौन कराला ना टाइगर रिजर्व हिसाब से गोटे नुआ टाइगर रिजर्व हिसाब से डिक्लेयर कराई केउंडार अच्छी शेरपुर और शिवपुरी, ग्वालियर और इंदौर. शिवपुरी है यार आंसर. When did second part of the budget session of the Indian Parliament commence? Second part केबे commence करा जिवो ना March 10 2025 रे commence करा जाईची. Where is CISF Rising Day celebrated annually? That is March 10 तारीख रे हम कौन कहूँ CISF Rising Day हिसाब रे हमें observe करचोंदी. When is National Safety Week observed annually in India? ना मार्च 4 रु नहीं कि मार्च 10 जाए कौन सेफ्टी वीक कौन करा होची नेशनल सेफ्टी वीक ऑब्जर्व करा जाउची. What was the theme of International Women's Day 2025 celebrated on March 8? थीम कौन आमे जानि चंदी मार्च 8 रे कौन करचंदी नेशनल इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व करचंदी. तो ताहाले
यार थीम हो जेंडर इक्वालिटी फॉर ए बेटर टुमारो, empowering women, changing the world, for all women, girls' rights, equality, empowerment, for women leadership, achieving an equal future. That is option C ହେଇଯିବ କ'ଣ? For all women and girls' rights, equality, empowerment. Who has been elected as the Canada's new next Prime Minister in March 2025? किए अपॉइंट होती हु इलेक्टेड कनाडास नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ना मार्क कार्नी ऑप्शन बी मन रखिए व्हिच क्रिकेट टीम ओन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तो यार आंसर है कौन इंडिया कौन कर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 वन कर नेक्स्ट टाइम देखिबा the 12th edition the Joint Special Forces Exercise that is Khanjar XII Khanjar 12 commenced on 10 March 2025 between which countries? India Pakistan, India Kazakhstan, India Russia, India Nepal, India Kazakhstan मध्य कौन होची ना खंजर एक्सरसाइज होची मन रखिबे who won the FID Fied World Championships 2025 प्रणव वेंकटेश आको वन करिसंदी who won the Prague Masters 2025 chess title मन रखिबे अरविंद चिदम्बरम that is option D. Who has been appointed as chairman of managing director that is CMD of Hindustan Petroleum Corporation Limited in March? That is Sanjay Kumar, Vikas Kaushal or Ramesh Gupta, Rajiv Sharma. So option B, that is Vikas Kaushal. What is the purpose of the Prime Minister Narendra Modi's visit to Mauritius from March 11 to 12? That is to attend a business meeting, to discuss trade relations, to attend the National Day celebration of Mauritius, that is to attend the National Day of Mauritius. Where will the Khelo India Para Games 2025 be held from March 20 to 27? That is New Delhi. When is जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड? आम कौन कौन जन औषधि दिवस के सेलिब्रेट कर मार्च 7 तारिख आम सेलिब्रेट कर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज साहित्योत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स फ्रॉम March 7 to 12 एट रविंद्र भवन न्यू दिल्ली? तो देखा नेशनल बुक ट्रस्ट ना साहित्य एकेडमी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? साहित्य एकेडमी यार सठिक उत्तर. The government has approved a rope-way project to Hemkund Sahib. This place is dedicated to which Sikh Guru? Na Guru Gobind Singh पे dedicated अटे. The government has approved the construction of a 12.9 km rope-way from the सनप्रायग टू व्हिच पिलग्रिमेज साइट? सनप्रायग रु केउटा को ना केदारनाथ जे गोटे रोपवे तयारी करा जिवो. What is the name of initiative launched by CISF on 56th Rising Day? यारो इनिशिएटिव कौन थिला 56th Rising Day रो ना सुरक्षित तथ समृद्ध भारत. Which two government public sector companies were granted Navaratna status by the Government of India in March 2025? That is C. What percentage of tariffs did US impose on Mexican Canadian imports excluding Canadian energy in March 2025? That is 25%.
By how much did US increase the tariff on the Chinese goods in March 2025? ना से कौन करछि 10 ରୁ 20% कोन इंक्रीज करा जायछि. Indian cricket team reached the final the championship trophy after defeating which team in semi-final held in 4 March 2025 in Dubai, that is Australia. Who was served as the Federal Chancellor of Austria in March 2025? That is Christian Stocker. What is the main objective of the model women friendly Gram Panchayat initiative? यार मेन उद्देश्य कौन ना मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत रो उद्देश्य होची ना टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस at the grassroots level. Which film won the Best Picture Award at 97th Academy Awards? तो देखियो यार आंसर कौन है जो अनोरा. डायरेक्टर के 3 बेकर्स रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अनोरा एमेडर बिगेस्ट विनर स्वीपिंग 5 मेजर अवार्ड्स नहीं. Who won the Best Director Award Oscar 2025 for film Anora? अब हम देखिले सेन बेकर बाकेर. Which actor won the Best Actor Award for his role the Brutalist? तो मन रखिबे यार आंसर कोन जिवो एड्रिन ब्रोडी. मिल्के मेडिसन won Best Actress for which film? एमिलिया पेरेस. Wicked, Anora, The Substance. तो आंसर कौन है जिवो अनोरा है जिवो यार आंसर. Where was the Khelo India Winter 2025 held from March 9 to 12 2025? गुलमर्ग. मन रखिबे ऑप्शन सी दैट इज गुलमर्ग. What was the Krishna Jayashankar's record breaking shot put throw at 2025 Mountain West Indoor Track and Field Championship 25 March रे तो कहते ना 16.3 मीटर 03 मीटर थिला record करथिले. How many riverine dolphins were recorded in the first ever estimation survey released on March 3rd that 2025 na 6327. Gio Saldana on the Best Supporting Actor Oscar 2025 for which film? Na film Emilia Perez. Which teams have qualified for the semi-finals of ICC Championship Trophy from Group A? Na India and New Zealand. When was World Wildlife Day observed annually? Na March 3rd. What determines the beginning of Ramadan, the fasting month of the Muslims? Na solar eclipse, that is sighting of the crescent moon. आई थिंक क्लियर है थिबो. तो आज आम कौन कले आम मार्च मासर कंप्लीट करंट अफेयर देखिले. तो नेक्स्ट क्लास रे आम कौन करबा फेब्रुआरी मंथ रो आम करंट अफेयर देखिबा. ठीक अछि. जदि क्लास टी भल लागिछि ताहाले लाइक से सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नै. जो माने पीके स्टडी आईक्यू आप को डाउनलोड करना आपण प्ले स्टोर रु जाइए डाउनलोड करि परिबे. सेठरे हमर कोन करा जाइछि प्रत्येक एग्जाम रो सब्जेक्ट वाइज कोर्स अवेलेबल करा जाइछि. जो माने इंटरेस्टेड अछन से माने सब्सक्रिप्शन नियंतु और आपण सेठरे भलो लाभ उठै परिबे. जय जगन्नाथ फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्लास देखा.